Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 6th of March. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana. Then we will be talking about pilot project that has been launched regarding hydrogen fuel. Next thing is we are talking about India's philanthropy spending. It has grown by 10 to 12%. It will be growing by 10 to 12% in the next 5 years as per the report. Then we will be talking about a joint venture that has been signed for light tank program, right? That is in the defense sector. So stay tuned with us till then, students. There are multiple news that will be benefiting in your preparation. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly. That will help you prepare better for the competitive exams. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one stop solution for current affairs. Also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Start some revision first. We will be talking about international news. India has ranked third globally for the LEED Green Building certification in 2024 that was topped by China. Then BIMSTEC Youth Summit to kick off in Gandhinagar, Gujarat. Then Trump has signed an executive order banning the transgender athletes from the women's sports. Singapore is the world's most powerful passport as of 2025 and India is at the 80th spot. Then Trump has declared Feb 9 as the Gulf of America Day after renaming Gulf of Mexico to Gulf of America. Then Dubai hosts the largest MRO Middle East and AIME 2025 edition. Then UN's Armed Food and Agriculture Organization, they have launched a $95 million climate resilient agriculture project in Somalia. 14th edition of Asian Fisheries and Aquaculture Forum on greening the blue growth in Asia Pacific region was held in New Delhi. Next is banking and finance. IDFC First Bank, they have launched exclusive banking package for senior citizens. Then RBI, they have reduced interest rates for the first time in 5 years. Then RBI, they formed a working group to review the trading and settlement training of the financial markets. Then IDFC First Bank and Econs, they have launched Amitabh Bachchan's AI avatar. Then RBI, they have approved 2 voluntary urban cooperative banks amalgamation. Policy Bazaar and HDFC Life, they have joined hands to offer products with 100% claim assurance. And EasyBuzz to get RBI authorization to operate as online payment aggregator. Then India's retail inflation eases to 4.3% in Jan 2025 and Exim Bank to provide $30 million credit to Vietnam for boats, petrol vessels and so on. Next is appointments and resignation. Biren Singh has quit as the chief minister after 2 years of Manipur. Then Nokia picks up Intel's AI and data center leader Justin Hotard as the new chief executive officer. Then Charanjot Singh Nanda elected as the ICAI president for the term 25-26. Then Shikhar Dhawan appointed as the brand ambassador of ICC Championship Trophy 2025. Then if we talk about awards, Tamil film Bad Girl has won the NET PAC award at the International Film Festival of Rotterdam. And Indian students has won the bronze at the Global Best MGov award in Dubai. So that's all for the revision part, students. These are the important one-liners. Now let's move on
Let's start with national affairs, students. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana. This is a scheme that has been launched for the unorganized workers in India. This scheme was basically launched in 2019, and the main aim of this scheme was to provide a social security, or we can say a pension, for the individuals in the unorganized sector after 60 years of age. This scheme is designed for the workers who contribute to 50% of the country's GDP, and it is a voluntary scheme. It depends upon you that you want to continue the scheme or not, right? And it was launched in 2019. It is a voluntary and contributory pension scheme. Here you can see the scheme will ensure a minimum of 3,000 rupees month pension for the individuals aged above 60 years and age. Here, the important thing to remember, who is the fund manager who will be receiving all those money and managing that fund. It will be managed by Life Insurance Corporation, LIC. And as of December, more than 30.51 crore unorganized workers have registered here for this scheme under eShram portal. Correct. Then here you can see the government and worker contribution will be in 1-to-1 basis. That means if you are contributing 100 rupees, similarly government will also be contributing 100 rupees here. Then if we talk about family pension, here if a person dies before age 60, then his spouse will be receiving 50% of the pension here. Right. Then if you exit before 10 years, simple interest rate will be given to you along with your corpus. And if you exit after 10 years, right, and before 60 years, then the amount as plus the returns on it or the interest rate, whichever is higher, will be provided to you. Next we are talking about a pilot project, that is National Green Hydrogen Mission, right? This is National Green Hydrogen Mission, and Government of India has launched various pilot projects, right, that will be powering the hydrogen fueled vehicles, right? Green hydrogen, first of all, you need to understand, students, this is a clean fuel and it is considered a fuel for the future. This is fuel when it's burned, the residue product is water vapors, water in the form of vapors, right? And similarly, this Government of India, they have launched and they want to promote the fuel, this hydrogen, green hydrogen, in the vehicles. So for the same reason, you will be seeing 5 pilot projects have been launched here under this mission, and it is Ministry of New and Renewable Energy, that is the implementing ministry here. You will be seeing these 5 pilot projects include 37 vehicles of trucks and buses, 9 hydrogen refueling stations, and they will be across the 10 different routes across India. And here you can see the routes where this hydrogen will be available. Next we are talking about is the 15th edition of the Indian Philanthropy Report. This is for the 2025 year, and recently this report was released by 2 organizations together, that is Dasra, that is a Mumbai Maharashtra based venture philanthropy firm, and second is USA based Bain and Company Incorporation, and this is the 15th edition of the data that has been released. This report is saying that in the coming 5 years, on an average, year on year, we will be growing by 10 to 12%, and this is basically the funding in the philanthropy sector. The primary source of this funding will be coming from ultra high net worth individuals, and affluent Indians. Who are these? Let's discuss. Ultra high net worth individuals have net worth of 1000 crore rupees and more. High net worth individuals are the individuals having net worth between 200 crore rupees to 1000 crore rupees, 200 crore to 1000 crore rupees, and affluent category includes individuals ranging from 7 crore rupees to 200 crore rupees, their net worth, right? And we will be seeing an increase in the spending here. Next is India's EPHL, that is Electro Pneumatics and Hydraulics Private Limited, and Belgium based John Cockerill Defense. These 2 organizations, they have signed a joint venture, that is 60-40 joint venture, and this joint venture will be focusing on what? It will be focusing on the Indian Army's light tank program, that is primarily focusing on Zorawar tanks. This will promote Atmanirbhar in India, right? This will promote better financing, and it will also help India's defense sector to grow. Next is Union Minister Prahlad Joshi has launched India's first AI-powered solar manufacturing line in Gujarat, right? This is AI-powered solar manufacturing line. That means the equipments, the manufacturing here, the automation will be done by AI, right? And as it is an automated factory run by AI, the speed of production will increase. You will be seeing better speed, better output, right, as compared to that of humans, right? That is the reason we are saying that the students, AI is very dangerous for the job market, and in the coming years you will be seeing multiple job losses will be done in the multiple sectors. Correct. Coming back, Prahlad Joshi has launched India's first AI powered solar manufacturing line in Gujarat.
right? And it is at the Goldie Solar Private Limited's newly built factory in Kosamba, Surat, Gujarat. One more thing, solar powered sound box. This was launched by which company? It was launched by Paytm. Next is international affairs. We are talking about data released by Brand Finance. Brand Finance is an organization, right? And they have released a data about the India's IT services, right? They are talking about not India's but globally's IT services, which are the companies that are providing the better services, who are giving better softwares, right? Which are giving the better output, their net worth, the projects that they are taking, their initiatives, and so on. In this data, you will be seeing it is Accenture of USA that has secured the top position with $41.5 billion brand value. Second is TCS of India, and third is Infosys of India. Important. Then if we talk about Brand Finance, who is the chief executive officer here? David Haig. David Haig is the chief executive officer here. Where is the headquarter? It is in London, UK. It was established in 1996. Next is banking and finance. Here we will be talking about SEBI. They have allowed all the NBFCs, HFCs to invest in the social security receipts that are issued by the asset reconstruction companies. What are the social receipts? These are the receipts of the bad loans, right? The assets that are under stress, right? So recently SEBI, they have allowed the NBFCs, that is non-banking finance companies, housing finance companies, so that they can invest in these security receipts that are issued by this asset reconstruction company. This initiative will do is this will boost the liquidity in the market, correct? Especially in the bad loan sector market, the distressed asset market, right? Then apart from this, SEBI, they have extended the deadline here for reporting the differential right issues that are issued by AIF, that is Alternative Investment Fund, to 31st of March 2025. Next is economy and business. CRISIL, they have projected India's GDP to grow at 6.5% in FY26. Take a note of this, students, right? CRISIL, that is Mumbai, Maharashtra based organization, that is a leading global rating agency, and they have released their outlook for FY26, and they projected a 6.5% growth in FY26. One more thing, remember, this growth can vary depending upon the monsoon in India, the international politics that we are seeing, also the tariff war that has been started by US Donald Trump, right? The US President Donald Trump, right? We are also seeing that in India, the similar tariffs that we used to import on multiple goods on USA will be imported on us by USA again in vis-a-vis, and this is expected that they will be coming into effect from 2nd April. This is a very tricky situation, students, in the geopolitics, and because of this we will be seeing huge impact in inflation also, right? The prices will be rising. We are seeing that $1 has crossed 87 rupees mark, and that means Indian rupees is depreciating. And if this goes on, then as we know that India is an import dependent country, we import a lot of goods. So because of this, we will be seeing that the cost of goods that we used to import earlier will increase, right? That means import will increase and the prices of that will increase, hence the inflation will be increasing and it will be difficult in the economy, correct? Next, if we talk about CRISIL, who is the managing director and chief executive officer here? Amish Mehta. Headquartered in Mumbai, Maharashtra, established in 1987. Next is India must grow by 7.8% annually to achieve the high income status by 2047. Why 2047? Because in 2047, 100 years of independence of India will be completed, right? This data has been released by World Health Organization, and this 7.8% annual GDP should be achieved by India for the next 22 years in order to become a high income country and become a developed country that we are currently a developing country right now, right? World Bank has released this, not WHO, I correct myself. World Bank released this data, right? And who is the president of World Bank? Ajay Banga, headquartered in Washington DC, established in 1944, right? Moving on. Next is IGBC. They have signed a memorandum of understanding that will promote green financing for the IBGC certified projects.
See, first thing, IOB. What is this IOB? Indian Overseas Bank. This is Chennai, Tamil Nadu based Indian Overseas Bank. And IGBC, that is Indian Green Building Council. CII, that is Confederation of Indian Industry, Indian Green Building Council. Correct? Now they have partnered together and signed a memorandum of understanding. They will be promoting financing in the IGBC certified projects, right? Basically what this will do is these organizations together will provide finance, and or we can say in simple term, house loans, right, to the home buyers. They will help the developers to build the projects. They will be helping the buyers on the other side so that they can take loan and buy those products. Next, if we talk about Indian Overseas Bank, who is the managing director and chief executive officer here, Ajay Kumar Srivastav, headquarter of which is in Chennai, Tamil Nadu, established in 1937. Next is Yes Bank. They have partnered with WTC Mumbai to support the MSME. What is WTC? World Trade Center. Correct. So Mumbai, Maharashtra based Yes Bank, that is India's 6th largest private sector bank in collaboration World Trade Center, Mumbai. They have recently hosted the Exports Conclave 2025 at Yes Bank House on 21st of Feb. Right. And as you can see, the focus on the term export. Why export we are focusing here? Because as I just mentioned that Indian dollar, or we say the $1 has crossed the 87 mark, and it is close to achieve the 100 rupees mark also very soon. So that means if the product that we are exporting today and it is fetching $1 to us, and in return of that where we are getting 87 rupees in term of that product, $1. So if this amount rises to 100 rupees, then what will happen is this $1 will become 100 rupees. That means if we are exporting goods and we are receiving the dollars exchange of it, and now at that time $1 will be giving us 100 rupees. That means it will benefit us, right? On the other hand, if we are importing more, then it will be negative for us, very negative for us, because it will rise the price of goods in the country and services. Correct? So Yes Bank, they partnered with World Trade Center to support the MSMEs, to help these MSMEs grow and to develop quality product and services which they will be able to export in the international market, where they will be fetching better returns or better prices. Next is government awards and recognition. Chinese architect Liu Jiankun has won the Pritzker Architecture Prize 2025. First thing first, this Pritzker Architecture Prize, this is given in the field of architecture, and recently it is Liu Jiankun, right? He will be honored with this Pritzker Architecture Prize for 2025, right, in Abu Dhabi, UAE, right? And he will become the 54th laureate here and second Chinese architect to be honored with this award. Next is appointments and resignation. Government of India has appointed Ajay Bhadu as the Chief Executive Officer of GEM, that is Government E-Marketplace. This will be coming into 3rd March 2025, right? He will be succeeding whom? He will be succeeding L. Satya Srinivasan. Correct? Let me show. He will be replacing L. Satya Srinivasan. Correct? And he will be coming into this CEO from 3rd of March 2025. Right, if we talk about him, Ajay Badu, right, he is an IAS officer of 1999 batch of Gujarat cadre, and he has served also as the Deputy Election Commissioner at the Election Commission of India. Then if we talk about Government E-Marketplace, who is the Chief Executive Officer now? Ajay Badu, headquartered in New Delhi, established in 2016. Moving on, next is acquisitions and mergers. ARCIL, they have acquired the Ujjivan Small Finance Bank's stressed loan portfolio for 34 crore rupees, right? ARCIL, that is your Asset Reconstruction Company India Limited, that is backed by USA based Avenue Capital Group and Mumbai Maharashtra based State Bank of India. They have acquired Bengaluru Karnataka based Ujjivan Small Finance Bank's non-performing micro loan portfolio. That means when a bank gave certain loans to the individuals, right? Say for example, the bank gave home loan to an individual investor, but because of some certain conditions he was not able to pay back that loan. That is your bad loan, right? And these are multiples, right? These are in terms of like hundreds or thousands, right? So the amount is very huge, right? So ARCL, they have bought that Ujjivan Small Finance Bank's portfolio, stressed loan portfolio for 34 crore rupees. That means in terms of that, the
ARCIL will be giving them 34 crore rupees, and they will be, how much money they will be able to recover from those bad loans, it depends upon them. That next is Mintalk. They have acquired DigiLedge in India's first e-rupee deal worth $3.5 million. Right, so Mumbai, Maharashtra based Mintalk Innovation Private Limited. This is an Indian startup that is backed by PayPal and Mumbai, Maharashtra based HDFC Bank, and they have acquired Bengaluru, Karnataka based DigiLedge for marking the first acquisition in the nascent central bank digital currency sector worth $3.5 million. Correct, take a note of this. Here the Mintalk, they aims to basically simplify the digital payment processes for the merchants, and this will support the SMEs, MSMEs also access the digital finance services, better services to be provided to them. Next is science and technology. DRDO, they have successfully tested the indigenous life support system for the LCA Tejas. LCA, what does this LCA mean? LCA is your light combat aircraft. Correct. So DRDO, they have successfully tested the indigenous life support system for these Tejas aircrafts, right? And DRDO's arm, Defense Bioengineering and Electromedical Laboratory. This is a Bangalore-based laboratory, comes under DRDO. They have conducted the high altitude trails on onboard oxygen generating system based integrated life support for the light combat aircraft Tejas. Say for example, this is Tejas, right? This is your aircraft, and when it is in clouds or at a very high altitude, due to some reason the aircraft fails, right? At that time the safety of the pilot is very necessary. So in order to provide a proper life support there, and also to generate oxygen in his chamber during that time, because at that time it is fully airtight, right, and no oxygen is there. So to provide oxygen generating system, so that at the time of failures particular oxygens can be generated, and whenever a parachute is also provided, and multiple other safety guidelines are there, right, for them. So to provide this onboard oxygen generating system, right, that will be a life support system for him, that has been recently tested by Defense Bioengineering and Electromedical Laboratory of DRDO. Next is NASA and Nokia. They have launched the first mobile network on moon. This is very important, students, right? A very important we can say a success for the humanity here, because on moon we are going and we will be launching network there, right? This will be part of the Intuitive Machines 2 mission, where Nokia and NASA, they have partnered under if you remember, I have discussed multiple times, there will be an Artemis program that will be going, that will be returning humans to the lunar surface by 2027. So in those astronaut suits, communication will be provided, right, because we have seen such a development now, right? So in the suits can be laced with the technology. So in the communication sector, Nokia will be providing the connection, internet connection there, or we can say Wi-Fi connection there at moon. Correct, important. Next is Obituary. Indian domestic cricketer Padmakar Shivalkar, right? Padmakar Shivalkar has recently passed away at the age of 84 in Mumbai, Maharashtra. Born in 1940 in Mumbai, he was known as Paddy and renowned for his achievements in the Ranji Trophy. Correct? Take a note of this. He recently passed away. Next is important day, students. World Engineering Day observed on 4th of March. This day is observed basically to create awareness about the sustainable development, to create importance about, because everything is technology based now. So how can we achieve these sustainable development goals based using the new technologies, right? This day is observed by UNESCO. Correct? And this is the 6th edition of this day that was observed. Next is, there is a theme, unleashing the power of engineers to advance the sustainable development goals. Next is International Day for the Disarmament and Non-Proliferation Awareness. This day is observed every year on 5th of March, right? And it is to raise awareness and understanding of the disarmament issues, especially among the young people. This year it was the 3rd edition of this day that was observed on 5th of March 2025. Correct? And first time this day was observed in 2023. Next is state news, students. Chhattisgarh's Finance Minister Om Prakash Chaudhary has presented 1.65 lakh crore rupees budget for FY
26, right? So who is the finance minister of Chhattisgarh? Om Prakash Chaudhary, that is OP Chaudhary, and he released this budget for FY26 worth 1,65,000 crore rupees, which is 17,554 crore rupees more than the budget of FY25. This budget will focus on a theme that is GATE, that will focus on good governance, accelerating infrastructure, technology, and industrial growth. Right, then a road plan for 2030 has been also developed, which has set up a Chhattisgarh Growth and Sustainability Fund, that was also launched the Mukhyamantri Mobile Tower Scheme, right, that has also focused on the new land registration system. If we talk about Chhattisgarh, who is the chief minister? Vishnu Diosai. Who is the governor? Ramina Deka. And what is the capital? The capital of Chhattisgarh is Raipur, and national park here is Indravati National Park, Kangar Valley National Park. Moving on, Mizoram's Chief Minister Pu Lal Dahoma has presented the budget also for the state, that is worth 15,198 crore rupees. Here focus will be on Krishak Unnati Yojana. You will be seeing Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana has been also will be focused under this. Then you will be seeing that Ban Kahya scheme for 350 crore rupees has been implemented here, and the government has also implemented 500 crore rupees and 100 crore rupees for power and road maintenance respectively. So 500 crore rupees for power and 100 crore rupees for road maintenance. Moving on, students, here you can see this Ban Kaya scheme. As we discussed, this scheme was officially launched in September 24, the aim of which is to provide financial assistance and support entrepreneurs and farmers, targeting the programs that are designed for the growth and self-sufficiency. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Then we will be moving on to the homework section. Next, which organization has stated that the growth in the assets under management of NBFCs is expected to moderate to 15 to 17% in FY25 as well as in FY26? It is CRISIL Ratings Limited, and this marks a decline of 600 to 800 basis points from a strong growth of 23% in FY24. Next, which among the following is not included in the abolition of the special additional excise duty, also known as the windfall tax, by the government of India in December 2024? Among the following which is not included here, so natural gas is not included in the abolition of the special additional excise duty, also known as windfall tax. So windfall tax on these commodities will be reduced. Next, in December, State Bank of India released their latest Economic Research Department report, stating that India's GDP growth is how much? It is 6.3% for FY25. Next, according to Asian Development Bank's report, that is Asian Development Outlook for December 24, steady growth amid a shifting global policy landscape, India's GDP growth forecast for FY25 has been reduced to it has been reduced to 6.5%, that was earlier estimated by Asian Development Bank to be 7%. Next is according to S&P Global Ratings report, India outlook for 2025. So India's GDP rate will remain unchanged at 6.8% for FY25. See, you are seeing different organization giving the different data. Next, which car has recently partnered with, or which car group has partnered with UNICEF to transform the educational landscape for 1 lakh children across 4 states in India? It is your BMW group. It is Munich, Germany based BMW group that partnered with UNICEF to transform educational landscapes for 1 lakh children across 4 states in India. Which are these 4 states? Assam, Jharkhand, Tamil Nadu, and West Bengal. Next, which among the following are right? About the National Apex Chamber, the PhD Chamber of Commerce and Industry, they have released this report, right? Among them, which of the following is right? Right? We have to tell me the correct one. If we look at the options, all these 3 are rightly mentioned. Next, Fitch Ratings Incorporation recently revised the India's GDP growth forecast for FY25, lowering it to from the previous estimates of 7%, lowering it to 6.4% from the previous estimates of 7%. Next is, which company has recently extended their partnership with Telenor Denmark, a leading mobile operator in Denmark, for another 5 years to enhance information technology systems? It is TCS, Tata Consultancy Service Limited, and it has been extended for 5 years.
Next is which company has collaborated with Amazon Finance India Private Limited to create innovative credit solutions for customers and merchants by offering loan products through Amazon's application and website. It is L&T Finance Limited. This partnership was unveiled at Raise 24, that is India's leading AI focused event focusing on banking, financial service and insurance sector. Next, Care Edge rating, they have recently revised the GDP projection for India for FY25 to 6.5%, that was earlier estimated to be 6.8%. Next, what is the total foreign direct investment inflow in India since April 2000 as per the data released by DPIIT? So since April 2000, India has received a total FDI of $1 trillion. Next, which company's board of directors recently approved the incorporation of a healthcare subsidiary to provide healthcare allied services? So, which company is it? It is your PB Fintech. Next, in December, TCS Limited, an information technology service provider based in Mumbai, Maharashtra, collaborated with Landis Gear, an energy management company that is based in Dash, to offer innovative solutions that help utilities improve energy efficiency. Right? That is based in Chem, Switzerland. Take a note of it. Next, which bank has recently partnered with TCS to modernize the bank's digital core for enhanced customer services? It is Bank of Bhutan. It is Bank of Bhutan. Next, in December, Finance Minister of UP Suresh Kumar Khanna presented a second supplementary budget of 17,865 crore rupees, correct, for UP for FY25. Next is in December, Hindustan Petro Corporation Limited, they signed an agreement with NICDC Logistics Data Service Limited to integrate their application programming interface with what? It is with Unified Logistic Interface Platform. Next is in December, India Ratings and Research released its FY 2026 macroeconomic outlook. It is projected that the Indian economy will be growing at dash in FY26. Indian economy will be growing at 6.6% in FY26. Retained inflation is projected at 4.4% in FY26. Next, students, let's move to the fourth homework section. First is which organization received the excellent rating for the fourth consecutive time in MOU performance. Second question, recently India has partnered with which country to enhance their cooperation in the critical minerals? And tell me for lithium also, specifically for lithium and then for critical minerals, two countries. Third question, recently Snack is the name of a 15-minute food delivery platform. This is launched by which organization? Fourth question, recently who has recently attended the AI summit in Paris, France? And fifth question is, students, tell me who has been appointed as the new chief of ISRO. So these are your homework questions, students. Let's move to the Hindi segment now. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, जो कि पेंशन स्कीम है, 2019 में लॉन्च की गई थी. देन हम हाइड्रोजन रिलेटेड फ्यूल्ड व्हीकल्स के कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो अभी लॉन्च किए गए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर. राइट, देन हम बात करेंगे इंडियन फिलेंथ्रॉपी रिपोर्ट की, जो कि जिसका 15वां एडिशन अभी रिलीज किया गया. देन एक जॉइंट वेंचर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लाइट टैंक प्रोग्राम जोरावा टैंक्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है स्पेशली. एंड मैनी मोर. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी बेनिफिट रहेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं. वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके. स्टूडेंट्स, हमें सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application, student, by the name Careers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily
weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code Vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded, which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO, and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स वन लाइनर से। इंडिया ने अभी रिसेंटली थर्ड सिक्योर किया लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में, जहां पे चाइना ने टॉप किया। देन बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 की गांधीनगर गुजरात में हुई। ट्रम्प ने देन ट्रांसजेंडर एथलीट्स को बैन कर दिया फ्रॉम वीमेन स्पोर्ट्स से। सिंगापुर, ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहेगा सिंगापुर कंट्री के पास। इंडिया की रैंक रहेगी 80। देन ट्रंप ने डिक्लेयर किया 9 फेब को एज द गल्फ ऑफ अमेरिका डे आफ्टर रीनेमिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको रीनेम करके क्या कर दिया गया है, गल्फ ऑफ अमेरिका। देन दुबई होस्ट करेगा लार्जेस्ट एमआरओ मिडल ईस्ट एंड एआईएमई 2025 का एडिशन। यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने $95 मिलियन का क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया सोमालिया में। देन 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम हुआ ऑन ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक रीजन, जो कि दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी आईडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया एक्सक्लूसिव बैंकिंग पैकेजेस फॉर सीनियर सिटीजन्स। देन आरबीआई ने रिड्यूस किया इंटरेस्ट रेट फर्स्ट टाइम पिछले 5 सालों में से। देन आरबीआई फॉर्म्स अ वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड इकॉन्स, इन्होंने लॉन्च किया अमिताभ बच्चन का एआई अवतार। देन आरबीआई ने अप्रूव किया 2 वॉलंटरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अमालगेशन को। देन पॉलिसी बाजार एंड एचडीएफसी, इन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स टू ऑफर प्रोडक्ट्स विद 100% क्लेम एश्योरेंस। ईजीबज़ एंड आरबीआई ऑथराइजेशन, ये ऑपरेट करेंगे एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। देन इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन ईज कर गया टू 4.3% इन जन 2025। एंड एक्सिम बैंक, इन्होंने प्रोवाइड किया $300 मिलियन का क्रेडिट टू वियतनाम फॉर बोट्स एंड पेट्रोल वेसल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। बीरेन सिंह, इन्होंने क्विट किया एज चीफ मिनिस्टर आफ्टर 2 years ऑफ मणिपुर वायलेंस। देन नोकिया, ये इन्होंने इंटेल के एआई को पिक किया एंड डाटा सेंटर लीडर को, जो कि है जस्टिन हॉटराड, एज द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देन चरणजोत सिंह नंदा, इनको इलेक्ट किया गया आईसीएआई का प्रेसिडेंट 2025-26 के लिए। एंड शिखरधन, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए। अवार्ड्स की बात करें तो तमिल फिल्म बैड गर्ल, इन्होंने जीता NETPAC अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम। एंड इंडियन स्टूडेंट्स, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता एट द ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड्स 2025 दुबई में। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कुछ और रिवीजन पार्ट पर एंड अपने मेन कंटेंट पर। स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि पेंशन प्रोवाइड कराती है इंडिविजुअल्स को जो कि 60 साल से ऊपर हो जाते हैं। राइट, यहाँ पे मिनिमम 3,000 रुपये की पेंशन पर मंथ से स्टार्ट होता है। राइट, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ अराउंड ये फोकस करती है किन पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उन पर, जो ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड ये एक वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। यहीं पे आप देखेंगे इसके अंडर 3,000 रुपये पर महीना मिनिमम से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है फॉर 60 ईयर्स के बाद। एंड अगर यहाँ पे याद रखेंगे किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, उनकी स्पाउस को मिलेगी 50% ऑफ द पेंशन। करेक्ट। फिर इसके बाद LIC यहाँ पे फंड मैनेजर रहेगा, जो इतना पैसा रिसीव होगा एज अ प्रीमियम वो कहाँ पे कौन हैंडल करेगा, उसको LIC हैंडल करेगा। करेक्ट। फिर यहीं पे मोर देन 30.51 अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वर रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम पोर्टल फॉर द सेम। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राइट। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी एक
इंपॉर्टेंट फ्यूल निकल के आया है, ग्रीन फ्यूल, या फिर हम इसको कहते हैं फ्यूल ऑफ फ्यूचर, क्योंकि इसको अभी ट्रायल किया जाता है, वेरियस पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, राइट। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस भी हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी सेटअप किए जाएंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई फ्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन का ग्रीन फ्यूल बर्न करते हैं तो वाटर वेपर निकलते हैं हमारा रेजिड्यू, तो ये क्लीन है, कोई भी कार्बन का कंपोनेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी यहाँ पे एमिट नहीं होता, तो इसलिए क्लीन फ्यूल माना जाता है। इसी को टेस्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी या इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री रहेगी। 5 पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे 37 व्हीकल्स को, ट्रक्स एंड बसेस को, एंड 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा। 10 डिफरेंट रूट्स में आप ये वो रूट्स देख सकते हैं जहाँ पे ये बसेस या ट्रक्स चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 15वीं एडिशन ऑफ आईपीआर, इंडियन फिलेंथ्रॉफी रिपोर्ट 2025 की। ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में जो फिलेंथ्रॉफी स्पेंडिंग है आने वाले 5 सालों में वो बढ़ने वाली है ऑन ऑन ईयर 10 से 12% यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, राइट। ये इंक्रीज किधर से आएगा, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, वो है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड एफ्लुएंट इंडियंस। ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की गई है? 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड दासरा जो कि एक वेंचर फिलेंथ्रॉफी फर्म है, एंड यूएसए बेस्ड बेन एंड कंपनी कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा ये 15वीं इंडियन फिलेंथ्रॉफी रिपोर्ट को रिलीज किया गया। अगर हम बात करें अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो हैं जिनकी 1000 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो हैं जो कि 200 से 1000 करोड़ की रेंज में आते हैं, एंड एफ्लुएंट इंडियंस वो हैं जो 7 से 200 करोड़ रुपए की रेंज के बीच में आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंडिया के ईपीएचएल जो कि है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है जॉन क्रॉकल डिफेंस के साथ जो कि बेल्जियम की कंपनी है। 60-40 का ये जॉइंट वेंचर रहेगा, एंड यहाँ पे फोकस किस लिए रहेगा? लाइट टैंक प्रोग्राम पर ऑफ इंडियन आर्मी, जोरावर टैंक्स पर फोकस किया जाएगा, राइट। एंड इनको ये फाइनल स्टेज में इनको टेस्ट किया जा रहा है, करेक्ट। एंड इनको डीआरडीओ एंड एलएनटी के द्वारा बनाया गया है, करेक्ट। और जो ट्रायल्स हैं वो अंडरगोइंग है, तो फोकस इस पे किया जाएगा बेसिकली लाइट टेक प्रोग्राम्स पर, एंड इसके लिए जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। इन्होंने इंडिया का पहला एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को एस्टेब्लिश किया, कहाँ पर? गुजरात में, राइट। ये एआई एनेबल फैसिलिटी रहेगी, काफ़ी प्रिसीजन रहेगा इसमें, काफ़ी स्केलेबल रहेगी एंड एफिशिएंट रहने वाली है। इससे ऑटोमेशन आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, नेट जीरो फ्यूचर की तरफ हम बढ़ते हुए दिखेंगे। एंड इससे आप देखेंगे एआई से अगर ऑटोमेशन आएगा तो बहुत सारी ऐसी जॉब होंगी जो हमें एलिमिनेट होती हुई दिखेंगी, राइट। इसका काफ़ी बड़ा इंपैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ेगा आने वाले टाइम में। इवन सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे, आईटी सेक्टर में भी एआई के आने से जो कोडिंग सेक्टर है, जो प्रोग्रामिंग सेक्टर है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता हुआ हमें दिखने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। इनके द्वारा ब्रांड फाइनेंस के द्वारा भी एक आईटी सर्विसेज के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि बताती है कि आईटी सर्विसेज कैसी परफॉर्म कर रही हैं, कौन है लीडर आईटी सर्विसेज कंपनीज का, राइट। तो यहीं पे अगर हम देखें तो एसेंचर जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है, इनको AAA+ रेटिंग दी गई। 41.5 बिलियन डॉलर की इनकी ब्रांड वैल्यू है। ये फर्स्ट पे, सेकंड पे टीसीएस, थर्ड पे इन्फोसिस ऑफ इंडिया, दोनों ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी जिनको AAA नेगेटिव की यहाँ पे रेटिंग देगी। बट स्टिल ये, क्योंकि इंडिया में भी आप देखते हैं टीसीएस एंड इन्फोसिस काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, राइट। अगर ये डाटा की बात करें, ब्रांड फाइनेंस किसके द्वारा रिलीज किया गया? ये ब्रांड फाइनेंस के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो है डेविड हेग। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, यूके में, एंड 1996 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। सेबी ने अलाउ किया एनबीएफसी, सभी एनबीएफसीज को, एचएफसीज को, ताकि ये सिक्योरिटी रिसिप्ट में इशूज कर सके, इन्वेस्ट कर सके, इशूड बाय एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एनबीएफसीज कौन है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एचएफसीज कौन है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये सिक्योरिटी रिसिप्ट जो कि बैड लोन्स हैं, राइट, उनको यहाँ पे खरीद सकती हैं, उनको बाय कर सकती हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, राइट। ऑल दीज एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। ये कब से हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे सेबी ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर रिपोर्टिंग द डिफरेंशियल राइट्स इशूड बाय एआईएफ्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, टू 31 मार्च 2025।
नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। क्रिसिल ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% इन FY26, राइट। क्रिसिल देखो जीडीपी ग्रोथ रेट हमें होता हुआ दिख रहा है, एंड अभी आप हमें आगे एक और रिपोर्ट पढ़ेंगे जो बताएगा कि हमें 7.2 से 7.8% के बीच में जीडीपी ग्रोथ चाहिए अगर हमें डेवलप नेशन बनना है, वो आगे देखेंगे। बट यहाँ पे फोकस कीजिए, क्रिसिल इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 6.5% से इन FY26। ये किस पे निर्भर हो सकती है, क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं? मॉनसून कैसा होता है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हमें देखती है। टैक्स बेनिफिट में तो काफ़ी पॉजिटिव हो गया, 12 लाख से ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, राइट। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए फिर यहाँ पे पता लगता है कि कैसी हमारी ग्रोथ होगी, क्या हमारी कंजप्शन होगी, क्या कंजप्शन नहीं होगी। क्रिसिल की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमीश मेहता। हेडक्वार्टर इसका कहाँ रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र। 1987 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया मस्ट ग्रो 7.8% एनुअली टू अचीव हाई इनकम स्टेटस बाय 2047। जैसा अभी मैंने बताया कि इंडिया को एटलीस्ट 7.8% से, नॉट 7.2 जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बट 7.8% से यहाँ पे इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा ताकि हमें हाई इनकम स्टेटस जो है वो हम अचीव कर सके 2047 तक। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, राइट। एंड हम जानते हैं कि 2047 इंडिया के द्वारा क्यों इसको चूज किया गया यही साल, क्योंकि इंडिया को 100 साल यहाँ पे आज़ादी के हो जाएंगे, एंड 100 साल में हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं हाई इनकम स्टेटस की इंडिया डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप नेशन बन जाए। एंड 7.8% आने वाले 22 सालों तक हमें एटलीस्ट यहाँ पे ग्रोथ रेट अचीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक एंड आईजीबीसी, सीआईआई आईजीबीसी। आईजीबीसी क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, राइट। इनके द्वारा एमओयू साइन किया गया ताकि जो ग्रीन फाइनेंसिंग है आईजीबीसी सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स में उनमें एनहेंस की जा सके। बेसिकली अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? देखो रियल एस्टेट में एक होता है डेवलपर्स जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एंड एक होता है बायर्स जो घर खरीदते हैं। तो दोनों को यहाँ पे फाइनेंस करने का ये काम करेंगे। डेवलपर्स को पैसे देंगे कि ये घर बनाए, एंड बायर्स को ये पैसे देंगे कि भाई आप लोन पे पैसे देंगे कि आप घर खरीदो, करेक्ट। तो ये फाइनेंसिंग है, ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर यहाँ फोकस किया जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर मैं बात करूँ तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? अजय कुमार। एंड चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। मूविंग ऑन, येस बैंक ने भी पार्टनर किया WTC मुंबई के साथ टू सपोर्ट द MSMEs, राइट। और ये क्या था? बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन ने होस्ट किया एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 को। तो देखो अभी हम जानते हैं कि $1 87 रुपीज़ के करीब चला गया है, राइट। एंड अगर ये डॉलर की वैल्यू और गिरती जाती है से, और प्रोजेक्टेड है कि ये 100 हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? जो हम अभी एक्सपोर्ट करने पे $1 पे हमें 87 रुपीज़ मिल रहे हैं, वही फ्यूचर में 100 रुपये मिलने लग जाएंगे। तो ये तो अच्छी चीज़ हो जाएगी, हमारे पास ज़्यादा रुपीज़ की डिमांड हो जाएगी। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कब पड़ेगा? जब हम इम्पोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को। इम्पोर्ट करने पर जो प्रोडक्ट की वैल्यू हम 87 दे रहे हैं वो बढ़ के कितनी देनी पड़ेगी? 100 रुपीज़ देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा, ज़्यादा पैसा इंडिया से बाहर जाएगा। और हम जानते हैं कि इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। तो ठीक है, हमें फोकस क्या करना पड़ेगा फिर कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं एंड जो इंपोर्ट कर रहे हैं उससे बैलेंस कर सकें। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव हुई जहां पर, राइट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक MOU वॉज साइन बिटवीन येस बैंक एंड WCTC मुंबई ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस कि हम कैसे एक्सपोर्ट पे बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पर। अभी चाइनीज आर्किटेक्ट लियू जियनकॉन, इन्होंने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2025 को जीत लिया है। ये सेकंड चाइनीज बने हैं जिन्होंने इस टाइटल को यहाँ पे जीत लिया है। इसी के अलावा ध्यान रखेंगे ये 54th लॉरेट बने ऑफ प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, एंड अबू धाबी UAE में मई के महीने में सेरेमनी होगी जहाँ पे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया अजय भाडू को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। 3 मार्च से ये लागू हो जाएंगी इनकी पोजीशन, एंड ये सक्सीड करेंगे किनको? L सत्या श्रीनिवासन को। ये एक IAS ऑफिसर है ऑफ गुजरात कैडर ऑफ 1999 बैच, एंड इनको 2 डेकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। ARCIL जो कि है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। ये बैक्ड बाय USA बेस्ड एवेन्यू कैपिटल ग्रुप एंड इंडिया की मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड SBI, राइट। तो ARCIL इन्होंने अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो स्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो है उसको 34 करोड़ रुपए के लिए खरीद लिया है, राइट। स्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो क्या होता है कि मान लो काफ़ी सारी
लोन दिए गए इनके द्वारा, बट वो लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो लोन से पैसा जो लोगों को ईएमआई भरना है वो नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो कई सारे सेक्टर हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे नॉन परफॉर्मिंग माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो को ARCIL खरीद लेता है, राइट, इन टर्म्स की जहां से अगर ये पैसा रिकवर कर पाएंगे तो कर लेंगे, वरना इसको एज अ डेट बैड डेट मान के या फिर इसको बोल के खत्म कर दिया जाता है, राइट। और उसके बदले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 34 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मिंटॉक एक्वायर Digiledge in India's first e-rupee deal worth 3.5 मिलियन डॉलर। तो e-rupee में CBDC के थ्रू ये ट्रांजैक्शन की गई है, 3.5 मिलियन डॉलर की रहेगी, एंड ये पहला एक्विजिशन रहेगा इन द नेसेंट CBDC सेक्टर वर्थ 3.5 मिलियन डॉलर, करेक्ट। तो मिंटॉक प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडियन स्टार्टअप है, बैक्ड बाय पेपल एंड मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड HDFC बैंक, इन्होंने एक्वायर किया बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड डिजिलेज को। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजीनियस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को फॉर LCA तेजस। LCA क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, करेक्ट। देखो लाइफ सपोर्ट तो होता है कि मान लो ऊपर कोई दिक्कत आ जाए एंड सिस्टम बंद हो जाए, एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स ठप बैठ जाए, तो उस केस में यहाँ पर आपका जो लाइफ सपोर्ट है वो आपके एयर सप्लाई रखे, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड करा सके, राइट। कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो हैंडल कर सके वहाँ पर, राइट। एंड इवन आप देखते हैं पैराशूट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये इंडिजीनियस लाइफ सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है ऑफ LCA तेजस DRDO के द्वारा, करेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे इनका DRDO की ही लेबोरेटरी है, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी। इन्होंने अभी रिसेंटली कंडक्ट करा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स ऑन द ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर LCA तेजस। नेक्स्ट आ जाते हैं नासा एंड नोकिया, इन्होंने पहला मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया ऑन मून। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंड ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट कह सकते हैं हम हिस्ट्री ह्यूमंस के लिए कि हम अब मून पर भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम मून पे भी जाके हम अपना इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे उसको यूज़ करेंगे, राइट। ये आर्टेमिस 2 या फिर हम बोलें आर्टेमिस प्रोग्राम रहेगा, नासा का प्रोग्राम रहेगा ये कि हम ह्यूमंस को वापस ले जाएं लूनर सरफेस पे 2027 में। और अब तो हम इतने एडवांस हो गए हैं कि अपने सूट्स में हम बेटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं एंड स्पूट्स के थ्रू जो आप इजीली कम्युनिकेशन हो सके, इसलिए यहाँ पर नोकिया को चूज़ किया गया नासा ने फॉर दिस फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री पे स्टूडेंट्स। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेटर पद्माकर शिवालकर, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 84 इन मुंबई महाराष्ट्र, एंड इनको पैडी के नाम से फेमस थे ये। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंजीनियरिंग के बारे में इंपॉर्टेंस क्रिएट कराने के लिए, एंड इसका हर चीज़ में आजकल हम रोल देख रहे हैं, उसमें अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को फॉलो करने के लिए हम टेक को यूज़ कर सके एंड जल्द से जल्द हम इन गोल्स को अचीव कर सकें, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसका 6वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया एंड इसकी एक थीम रहेगी अनलीशिंग द पावर ऑफ इंजीनियर्स टू एडवांस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड यूनेस्को यहाँ पे इसकी थीम रहेगी, यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे फॉर द डिसआर्ममेंट एंड द नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे, जो कि 5 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली जो आपका पब्लिक इश्यूज़ हैं उनको रेज करने के लिए, डिसआर्ममेंट इश्यूज़ को रेज करने के लिए एंड यंग पीपल को अवेयर कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने इसका 3rd एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ओम प्रकाश चौधरी OP चौधरी जी के द्वारा 1.65 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY26। यहीं पे आप देखेंगे गति मॉडल पे ये बेस्ड रहेगा प्रोजेक्ट बजट, जो कि है गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड 17,554 करोड़ ज़्यादा है ये लास्ट बजट के, जो कि है FY25 के। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर स्कीम छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर स्कीम, छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड, ऐसी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई है। रोड प्लान बनाया गया 2023 के लिए, नए लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स यहाँ पे लाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदियो साय एंड रामेन डेका यहाँ के गवर्नर रहेंगे एंड कैपिटल रायपुर। नेक्स्ट आ जाते हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर पू लालधोमा, इन्होंने प्रेजेंट किया 15,198 करोड़ रुपए का स्टेट बजट, राइट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो बाना किया स्कीम है, हैंड होल्डिंग स्कीम, इस पे यहाँ पे पैसा खर्च किया जाएगा एंड 75% इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इस फंड में। फिर इसी के अलावा आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है उन्होंने 500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए फॉर पावर परचेज एंड 100 करोड़ अलोकेट किए गए फॉर रोड मेंटेनेंस। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर
पाल लॉल दोहमा, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बन का यह स्कीम, ये क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स, ताकि जो भी उनको इकोनॉमिक ग्रोथ है, सेल्फ सफिशिएंसी है, उस पर फोकस किया जा सके। राइट, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके, फाइनेंस की जरूरत है तो वो दी जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टेटेड दैट द ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ एनबीएफसी इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 15 to 17% इन FY25 एज वेल एज इन FY26। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा प्रोजेक्ट किया गया? क्रिसल के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया। नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबॉलिशन ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम विंडफॉल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हटाया गया है। राइट, तो इसमें से नेचुरल गैस वो कमोडिटी नहीं है, बाकी सब पे जो विंडफॉल टैक्स है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, एसबीआई के द्वारा भी लेटेस्ट ईआरडी रिपोर्ट रिलीज की गई, जहां पे उन्होंने जीडीपी प्रोजेक्ट की गई इंडिया की कितनी, वो है 6.3% फॉर FY25। नेक्स्ट आ जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा भी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिलीज की गई, जिसमें बताया गया, पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा इन FY25, वहीं पे इनके द्वारा अब ये प्रोजेक्शन घट के कितना हो गया, 6.5% का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इंडिया का आउटलुक कितना है, या फिर इंडिया ये कितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया कितनी जीडीपी से ग्रो करेगा, 6.8% से ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कार ग्रुप ने अभी रिसेंटली यूनिसेफ के साथ पार्टनर किया, ताकि इंडिया में जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसको और बेटर किया जा सके एंड 1 लाख बच्चों को अक्रॉस 4 स्टेट्स इन इंडिया यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके। 4 स्टेट कौन सी हैं? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड झारखंड। यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए ये टाई अप किया है। तो BMW ग्रुप ने, जो कि म्यूनिच जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इन्होंने यूनिसेफ के साथ यहाँ पार्टनर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल एपेक्स चैम्बर, द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स, इन्होंने भी इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट करी। फिच के हिसाब से इंडिया 6.4% से ग्रो करेगा FY25 में। ये भी पहले 7% से प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब घटा के इन्होंने 6.4% कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया देयर पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, जो कि एक लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर है इन डेनमार्क, फॉर अनदर 5 years टू एनहेंस IT सिस्टम्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे एक्सटेंड की अपनी पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क? वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एंड 5 साल के लिए ये यहाँ पे अपना पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ, ताकि इनोवेटिव क्रेडिट सॉल्यूशंस को लाया जा सके फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स बाय ऑफरिंग लोन प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजॉन्स एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, केयर एज रेटिंग्स, इन्होंने भी प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी, जो ये पहले 6.8 प्रोजेक्ट कर रहे थे फॉर FY25, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है टू 6.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना देखने को मिला सिंस अप्रैल 2000। ये डाटा DPIIT के द्वारा रिलीज किया गया, एंड इनके हिसाब से इंडिया ने $1 ट्रिलियन का यहाँ पे अप्रॉक्स FDI देखने को मिला है इंडिया में सिंस अप्रैल 2000 से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडरी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड अलाइड सर्विसेज? वो है PB फिनटेक। नेक्स्ट आ जाते हैं, TCS लिमिटेड, जो कि एक IT सर्विस कंपनी है बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, इन्होंने कोलैबोरेट किया लैंडेस प्लस GYR के साथ, जो कि एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है बेस्ड इन छम स्विट्जरलैंड, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सके यूटिलिटीज़ के, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। जैसे LED बल्ब्स आप देखते हैं, राइट, ये गेम चेंजर थे अप्लाइंसेज में, क्योंकि पहले जो बल्ब आते थे वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बिल बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन वहीं पर अगर हम LED यूज़ करें तो इससे बिल भी बहुत कम हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट है ये। Next, which bank has recently partnered with TCS to modernize the bank's digital core for enhanced customer services? तो किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है TCS के साथ? तो वो है बैंक ऑफ भूटान ने। नेक्स्ट, इन दिसंबर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा सेकंड सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। कितने का बजट था? 17,865 करोड़ रुपीस का ये बजट रहेगा, 17,865। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि इनके API को इंटीग्रेट किया जा सके। किसके साथ? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ। ये क्रूशियल एडवांसमेंट रहेगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। इन्होंने अपनी FY26 की मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा इन FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे स्टूडेंट्स। पहला है, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने कन्फर किया प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड ड्यूरिंग द डैश प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में, कौन सा एडिशन था। सेकेंड क्वेश्चन, अभी रिसेंटली लेबनान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वेनेजुला के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं एंड घाना के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये तीनों बताओ। थर्ड क्वेश्चन, अभी रिसेंटली ज़रा बताओ किनको या फिर किसने रेज किया $1 बिलियन का ओवरसीज बॉन्ड इशुएंस थ्रू ओवरसीज बॉन्ड इशुएंस। देन फोर्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एंड उसकी थीम भी बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स, NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस भी कब ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा ये तो हो ही गया है, तो नेशनल यूथ डे बता दो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए एंड सभी बच्चे जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो।